Viewers, tonight we marked 17 years since the horrific 26/11 attacks. 166 innocent lives. Hotel Taj in flames. CST dripping with blood. A city held hostage for 60 hours by 10 Pakistani terrorists. But viewers, 17 years later, nothing has changed. The same ecosystem that shed crocodile tears then is busy whitewashing terror today. Remember 2008, while Mumbai was still burning, Congress leader Digvijay Singh said that 26/11 is some RSS conspiracy. And the Congress lapped it up. Pakistan was absolved before the blood had even dried on the floor of the Taj Hotel. And 17 years later, viewers, nothing has changed. Only the targets are new. Just think of what happened after the car blast outside the Red Fort in Delhi. Within hours before the smoke had cleared, the same ecosystem swung into action. They said Kashmiri youth are being framed. This is a false flag by agencies. That lobby that called Batla House encounter fake said that every arrest in this case is a conspiracy. Viewers, this is a syndicate, a terror apologist ecosystem that trivializes terror. Because for them, the terror or war on terror is not a national cause. It is some political tool. When India strikes terror camps across the border, they try warmongering. Then they ask for proof, sabut. When agencies arrest sleeper cells, they say this is witch hunt. When courts hang terrorists, they want a stay till 4 a.m. We were 17 years after 26/11. We must ask just one question of this ecosystem. Whose side are they on? On the side of the martyrs who die fighting terror, or on the side of Pakistan, ISI, their handlers? The side of 140 crore Indians who want terror crushed, or on the side of the candle-holding club that wants root causes distrust while bombs are still ticking? Viewers, on the 17th anniversary of 26/11, let us expose them. This is not about left or right. This is about India versus those who shed tears for terrorists. Sushil Pandit joins the panel. Advocate Nilofer Masood, leader of the National Conference. Mr. S. Balan. Mr. Pandit, nothing has changed. And nothing will change, because they are the same faces, same names, same families, and same politics. Where is the incentive for change? They will keep giving terror the cover fire because they have a great cover for themselves. We feel when they take the oath of our constitution, fight elections, they are wedded to our democracy. No, they use it as a cover. They use it as a camouflage to destroy the system from within. Whether it is a Mufti or an Abdullah, they are forever batting for jihadis for them from within the system. And look at their policies, look at their decisions, look at their manifestos, look at their statements. It is consistent. It is we who indulge in self-deception. It is we who fool ourselves in believing that they will deliver. They will give peace, they will give development, they will give national integration a chance. It is a very elaborate self-deception that we indulge in. Mr. Pandit, I don't know whether you are aware of what Omar Abdullah has said. The Chief Minister, he said that if you hound Muslim students, you will face the consequences. We have his comment. Unfortunately, we don't have the time. Let me bring in Nilofer Masood. Miss Masood, ये उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन की तरफ जो यूथ है उस तरफ चला जाएगा? जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से टेरर को वो? Nobody is justifying the terrorism, and nobody should in fact justify the terrorism. जो आप अभी क्लिप चलाने की बात कर रहे थे, it would have been better अगर वो आप क्लिप चलाते to interpret in your own language. चलिए मैम चला देते हैं, सुन लीजिए. Listen to Omar Abdullah. Okay, we'll play that in just a bit. Yeah, sure. Make your point. First of
Yeah, first of all, I would like to pay tribute to the framers of our constitution because we are celebrating Constitutional Day today. वो सब जिन्होंने हमें इतना बढ़िया और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए. एंड रियल ट्रिब्यूट विल बी लाइक जो प्रियम्बल विच इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, which speaks about justice, equality, liberty, fraternity, and also it also speaks about the secularism. It is in this context what Mr. Umar Abdullah has said today in one of the rallies. Ma'am, तो उसमें जो ma'am, help me understand. One minute, नीलोफर जी, दिल्ली बॉम्बर जो था, जो गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स लेके जिसने ब्लास्ट किया, he was a doctor. He was not denied any opportunity by the state. What led to his radicalization? There are so many other people from the other religions who are involved in all these terrorist activities, but you cannot just let's call them out. बताइए, give me the list. देखिए, इसी लिस्ट में जो अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक हिंदू का भी नाम आया है. इवन द अजीत डोल स्टेटमेंट इज देयर. किसी ने ये बोला, स्पीकिंग मिस मसूद, किसी ने ये बोला कि अगर किसी एक कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो वो रेडिकलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, ये बोला किसी ने? Activities, उसको आप क्या कहेंगे? What is that radicalization called? Where the Hindus are also included. I am not on this subject to divide the people among the Hindus. Divide the people? You are trying to justify terror, Tushar. The Congress and its ecosystem and some of the regional parties, they do not understand and they will never understand. Terrorism is not against the BJP. Terrorism is not against the voters of one party. Terrorism against the Indian state and every single Indian. If today investigating agencies are doing their jobs, they're not there to protect a party, they're to protect every single Indian. But what do we get from these regional parties? अरे आप तो लोगों को radicalize कर रहे हैं. अरे अगर लोगों को आप call out करेंगे तो और radicalize हो जाएंगे. आप एक बात बताइए मुझे, अगर investigation agencies टेररिस्ट को पकड़ रही है, उनके इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रही है, खत्म कर रही है जड़ से, इसमें कोई तीसरा आदमी रेडिकलाइज क्यों होगा? ये कॉजालिटी जो आप बनाते हैं, ये कनेक्शन जो आप बनाते हैं जबरदस्ती का कुछ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए, कैसे जस्टिफाइड है? 26/11 हुआ जब आतंकवादियों ने, और 26/11 है, जब आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों पर गोलियां बरसाई, वो क्या उनसे पूछ रहे थे, अरे भाई तुम कांग्रेस के वोटर हो, भाजपा के वोटर हो, पीडीपी के वोटर हो? You know, Mr. Chidambaram summed it up. He said, circumstance के वजह से हो जाते टेररिस्ट. हर्षवर्धन जी, आपने तो सुना होगा उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा. देखिए प्रणेश, मुझे सबसे बड़ी चिंता इसी बात की होती है, रेडिकल इस्लामिक थॉट इस तरह के आतंकवाद के पीछे है. ये कहने में क्यों मुसलमानों के जो बड़े लोग हैं उनकी जुबान जलती है? क्यों ऐसा होता है भाई? क्या इसके पीछे रेडिकल इस्लामिक थॉट नहीं? वरना कौन सा आदमी होगा जो इस तरह से बम धमाके में फट जाएगा और आप खोज कर लाते हैं कि कहीं से कोई हिंदू निकाल ले या कोई और निकाल ले और कहें वो भी टेररिज्म प्रोसेस में कहीं शामिल था? किस तरह की लॉजिक दी जाती है? और वो उमर अब्दुल्ला जिनके 3 पीढ़ियों से वो जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे हैं, जिस जम्मू कश्मीर को अभी जाकर बंधक बनाया गया था, जिससे मुक्ति मिली 5 अगस्त 2019 को, अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि कश्मीर में या तो मुफ्ती या तो अब्दुल्ला. और किस प्रोसेस की बात कर रही है? क्या वो जो डॉक्टर फटा है या जिन लोगों ने उसका साथ दिया, या जो एलजी ने जिसको टर्मिनेट कर दिया था उसके बावजूद अल्फा में जिसको प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है, कौन सा नेटवर्क काम करता है? कौन सा इकोसिस्टम है? ये सब ये सेंस ऑफ एलियनेशन की वजह से ये उधर चले गए, रेडिकलाइज होने. मिस्टर बालन, what forces people to pick up the gun? Yes, sir. See, people pick up the gun. See, today is the Constitution Day. Let us start with Article 25, 26. Mr. Balan, why do people pick up the gun? Just answer the question if you can. Let us not target a single religion. Wait. I am answering you. Who picked up gun in Malegaon bomb blast? Who picked up gun in Samjhauta Express? Who picked up gun in Malegaon, sir? Tell me the name. Let's have names. Come on. Who picked up the gun in Malegaon? Who? Tell me. Give me the name. Who picked up the gun?
You have the Who name? picked up gun there? Ask Karkare. Read the charge sheet. Who has done it? Who is Sadhvi Pragya has a clean sheet from the courts in which you don't believe, Mr. Balan. Come prepared for the show. And listen to what Omar Abdullah had said. Nilofer ji, ध्यान से सुनिए. जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है. वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना. अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो. कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार है? आप ना मुसलमान बच्चों को सुना आपने नीलोफर जी, ये कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं? अल-कायदा, एलईटी, आईसिस? देखिए, अगर वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आप कहते हैं कि वहां उनको ब्रेन वॉश किया जाता है. अब अगर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में इनको मेरिट बेसिस पर, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर 50 में से 42 ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि भाई Ma'am, this is not about merit. Had he only made that point, he went on to say that if you deny them this seat, you will force them into radicalism. That is wrong. But it's the ideology that some of you follow. And there is no justification for terror. Mr. Balan, just Google. Terror has no reasons. No reasons. You can't pick up the gun against the state, against your own people. And then talk of constitution in the same breath. Don't do this, please. We've run out of time. I thank all of you. The news hour with Navita Kumar on the other side.